श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रम् ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशां कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदळिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभना दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणा साभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भत्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नक्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता
महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता केयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणा नो विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी पिसतन्तुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कळङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी
निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचुकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारथिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी मह महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वरमहाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेशमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्टिपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता
कादम्बरीप्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या मन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितिरूपा परा प्रत्यक्षितिरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सत्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेदभानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिधृतिः शान्तिस्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रूशोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी
अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामाभावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्राधिका वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजाचिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोलता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा फालस्थेन्द्रधनुःप्रभा हृदयस्था त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्तस्थितिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः
अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लो लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्राविधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राज्यत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाशिता राजलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरवित्प्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदार रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रभा
नो ओ वेट् दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया न, मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुत्ताम वैभवा वर्णरूपिणी जन्ममृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कृष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्जिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुत
श्रुतिसंस्तुतवैभव मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धुककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा शिवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितारहस्यनाम साहस्रस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा। इदं न मम वदतु। इदं न मम इदं न मम इदं न मम सर्वं सर्वं श्री श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जगदम्बार्पणमस्तु। ओम तत्सत्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। భగిని వన్ డౌట్ uh, ఇక్కడ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామాది చదవచ్చా ఫస్ట్, లేకపోతే డైరెక్ట్ సింధూర అరుణ వెళ్ళాలా? అరుణాం అది చదవచ్చా? అది కూడా అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షిం ధ్యాన శ్లోకం భవతి. So you should read it. At least one. There will be 3. You should do at least one dhyana shloka. Arunam va, Sinduraruna Vigraham va, one more bhavati kila? Sakunkuma Vilepana. You can pick one or you can do all 3. Generally, Arunam Karunam is more famous because it is simpler and has all aspects of Devi.
her alankaram is there, animadi, siddhis are there, and all that. Ataha. And this one, Lalita Divya, Asya Sri Lalita Divya Sahasranama Stotra That Mantrasya. one, it is all, if you do the nyasam, like you have the mudras and do nyasam and all that. But if you are doing just nama parayanam, you don't need to do all that. So Nama so I parayanam, don't need to do that one, right? But if I do it, is it something wrong? But you should know how to do, that, how to invoke which. Without knowing, I should not do. Right? It is better to learn when you are doing anganyasa. Nyasa means you are invoking. Anganyasa, you are invoking the energy in your body parts. So you have to use your body parts little bit, and you need to learn from probably a priest or a guru on how to do the nyasa. Okay. But if you are simply doing nama parayanam, you don't need to do all that. Direct dhyanam. And this one, Om Aim Hrim Shri Matre Namaha, before reading Shri Mata Shri Mahara. Yes. Those are the bija mantras of Devi. So it is advised. So we can read Am, right? Am, not only because you are an Isha meditator, you got initiated into Am chanting. If there is no Upadesham, you have to do Om. Only if you know, if you are initiated, will you do Am. Otherwise, Om Eva. Okay. Even for any mantra? Generally. Okay. Got it. Thank you, Bhagini. Dhanyavad. Astu. Now time for Savita. Ambaha, vadatu. What? No, she I want wants her two things. Review from mom first. Okay, because she's little nervous. Review from mom first. Mom is nervous today. This is Vichitram. I'm like, Mahasakti. I was like waiting. Are you going to do Mahashakti va Mahasakti va? No, she did Mahasakti. Correct. She did good. And she looked at me and I was so relieved. She got it. She also got corrected like me recently? In the book. When they taught the previous batch, there was that question on Asakti va Shakti va iti. Then they got that corrected. I have a question, Amma. So I didn't know how to read this one. In 8th, Kadamba Manjari Klupta Karnapura Mohra. Is it Klupta? Klupta? Just like Rikaram asti kila. Klupta? It is not Ru, it is not Ri. It is in between sound, right? Ritvam. Just like that, this La is like that. It is not Li, it is not Lu. It is Klup. I said that, right? Yes. Yeah. You said that. That's what she said. Perfect, Amma. I wanted to say both because I didn't know which one it was. No. Sometimes, you do perfect. She's the senior chanter, right? Pravina does everything perfect, but still doubts. She is my teacher. She did everything perfectly. Yes. That's what I'm saying. When you are so senior, sometimes you also will doubt by yourself. She did everything right, but doubting. 178 madhye ekavaram karotu. Prathama pankti. 178? The whole thing? Prathama. Suvasinyachana Prita Shobhana Shuddha Manasa. Wonderful. Suvasi I could not hear that C. I heard Suvasa. Suvasinyachana Prita Shobhana. Samyak. But the pacing, Pravina, that is neither too fast nor too slow. This is perfect, which you can do in the right timing. You don't have to compromise on anything in this timing, but you are still in the time. Her pacing is so perfect. Yes, this is like practice for me to go a little faster, but also still being like watching everything and not making exactly. The best part was because she had to flip the page, there is time to breathe. That's why you are able to get that. No. Pacing wise, I rate her more 100% than mom. Mom is either too fast or too slow. Yes. I agree with this. Savita, your pacing, oh my God.
Perfect, ma. Perfect means perfect. You are not compromising. You are not too slow. You take forever, or not too fast where something is missed. It was so perfect. I don't know, Devi Krupa, how you landed like that. So good, ma. Thank you so much. Savita, redirect that to Devi's feet now. Physically, na, mentally. Mentally, she's there. But this is a genuine feedback. You have to agree. Praveen Yes. Akka is either too fast or too slow. Yes. So Savita and I, if we sit together, she is like, Amma, little, that faster. Savita pacing is too good. She had to like, consciously slow down for us today. Normally, she's faster than. she is. See, anybody can be faster, but when you want to do it in a group, you got to pick a pace where it's not too fast or too slow, and she's just landed right there, you know? Yes. Yeah. Yeah. Everything perfect, Nana. Your Amma, Mahaprana. so perfect. I'm sure Mummy did not read like this in your age when she did chant. So Maybe No she doubt, Praveen. 16. I was 16 when I got. See, No doubt. even when No you- doubt. Praveen no doubt. learned now. No. And even Amma said, no, I have done very good. We won't believe Amma because we heard you. We don't know how she did, right? So until Love you, 2019, I Pusha. did not do proud. And also, Pravina was busy finding out mistakes in Lalita Sahasranamam. Remember, she said, like when someone told her. So that's why. Yeah. But it's her punya. Yeah. She could able to do so good in this young tender, not even 16. Even Bala Tripura Sundari, you have to be 16. She's like that age where she's not even, 16 yet, but she can do so perfect. She's doing Our and she's best also teacher. teaching. That is next level. So one thing I must bow down to Devi. I was looking for teachers for Savita to teach Lalita Sahasranam because I was not sure if I can teach her, like if she will learn from me. But because of all of you, she joined the class and she learned it too. I was begging others, can you please teach Savita? Can you please teach Savita? And in fact, I asked my nephew's my nephew's wife also, can you please teach her Lalita? But I was hearing some mistakes there. I'm like, oh, I don't know if I want you to learn with mistakes. But at the same time, I was not sure if I can be in the Acharya place to teach. So, but I'm glad that Devi somehow brought you all. I never thought I'll ever teach Lalita in my life. There is a shake inside me to teach Lalita. And somehow Suchitra Akka and Rama Akka, Shubha Akka kept coming to me asking for Lalita corrections. And then one fine day, there were more than 11 people asked at different times to teach Lalita. That's when I took it as Devi's thing and we started. And Savita became the student. Savita learned with us only, right? Pravina, yes. And you should see, she had her class at that time. So when you guys were doing Mandala Sadhana in the evening, she will only be assigned some shlokas until a certain number. That one she was perfect. But after that, she will go for her class. So she was like, Amma, I don't know how to do the rest properly. But yeah. And all your blessings. I'm telling you, biological mother is only one aspect, but that motherly love coming from other mothers is the biggest gift that she gets through this. Very Also, so beautiful, so beautiful. About Savita's chanting. She makes even the really difficult words seem so easy when she's saying it. Totally true. Totally. So when effortless. She's saying it looks so effortless. But when I try to say it, I'm like, what is this? What is this? I'm having to pause 4 times. So effortless, that's Vakshuddhi. From young age, she's doing these things, right? So all of you, please put a strong sankalpam that she has to deepen her Lalita sadhana, because 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years, 21 years, 22 years, 23 years, 24 years, 25 years, 26 years, 27 years, 28 years, 29 years, 30 years, 31 years, 32 years, 33 years, 34 years, 35 years, 36 years, 37 years, 38 years, 39 years, 40 years, 41 years, 42 years, 43 years, 44 years, 45 years, 46 years, 47 years, 48 years, 49 years, 50 years, 51 years, 52 years, 53 years, 54 years, 55 years, 56 years, 57 years, 58 years, 59 years, 60 years, 61 years, 62 years, 63 years, 64 years, 65 years, 66 years, 67 years, 68 years, 69 years, 70 years,
Lalita sadhana is 20 minutes, and 20 minutes in our schedule is very hard to get these days. But if she gets Lalita and holds on to it, it will be one of the best gifts she can give it. So every day she reads Lalita Sahasranam. Ayo, that is my wish. That is my wish. But you started at age of 16, right, Bhagini? 16. Oh, Pravina, you are like you have so many wishes and lists. How can she fulfill? Tell me. Huh? First of all, she's getting up at 4 o'clock. Huh? That is not my wish. That is hers. But hers only. But in a way, she's trying to fulfill your wish by that action. Savita. One thing is pleased. How many she can please in that age? I actually Yes, beg her, true. please sleep. I ask her, Savita, it's okay if you sleep. You did not get enough sleep, right? It's just 4:55, but you can sleep. She's like, Amma, I'm coming. I feel guilty if I don't come. Oh my God. Did we ever had any guilty? We did not wake up in that age. I know. I know. Oh my goodness. But I mean, she does so much of sadhana in that age. At least I Only don't know. Navaratris, I don't know, something happens. Navaratris. Rest of the time, Durga Saptashloki itself is long. Forget that age. Even now, waking up is a struggle for Right, me. that I think it will be always a struggle. I don't have any optimistic things that in future it will be get better. So that's how it is, but I mean, for that age, if she's getting up that early and doing Saundar Lahris, it's an unbelievable thing. I don't think and teaching us everyone. teaching Saundarya everyone. Lahari. I That think is in the not easy. entire I didn't even know what is Lalita Sahasranam even after my marriage. Yeah, totally. I agree. So much of us heard that. I think I heard anything like that exist in the last 13, 14 years after coming to US. So, I mean, we don't have that kind of anything when we are growing up, right? At least in where the family that I was growing. Yeah, there's so much puja, so much happens, but not in this terms of Lalita, Vishnu, or Saundar Lahari was not a part of it. So one thing that was very interesting was Savita was around 9 when I learned Saundarya Lahari, right? So when I was learning, I'm doing Shiva Shaktya Yukto, like that. I'm practicing for the first time. She got it sooner than me. Then I'm like, really? And I sent that recording clip to my teacher. And instead of saying excellent, she said, may she be blessed with an opportunity to teach others. I don't know. That could be my teacher's blessing. She is a Devi Upasaka. And when she said that, I did not see it coming. Then hearing that, I thought, okay, maybe she can teach. And I asked her, can you teach? Can you teach? Can you teach? She's like, Amma, why will I teach? Like that. But when all aunties somehow asked for Sankshep Ramayanam and all that, somehow it happened. All aunties asked. Initially they said, Savita, Pranati just teaches until Anand Lahari because Amma has Sanskritam exams. Then they were like, okay. Then they said, oh, 40 are done. Teach us the rest also. That is done. Then they said, you taught us Saundarya Lahari. Teachers Shivananda Lahari. Oh, that is done. Then Lalita. Okay, Lalita also done. So it is definitely my teacher's blessing. And of course, unless Devi blesses, not because I merely wish for it, but something out there. Up there. Beautiful. Yeah. That is meant for her. She has. When did mom became a teacher? 40 plus. 40 plus. She's born teacher. So that's her punya, Savita Nana, your Mahapranas were good, Alpa Pranas were good, and pace it was. Look at her smile, getting the review from mom. Arunam Karuna, but Stamp of approval. that is like, I can't believe what light you focused, ma. That radiance of red. What is that light? Oh, you see, there's red. Oh, curtain, red. No, Swami Vari
cloth. This is Tirupati. Tirupati Swamvar Mm. Vastram. Mm. Everything focuses, and she is wearing that reddish thing. Oh my God. Yeah, that orange color looks so good on you, Savita. So good on her, and it's oozing red face. It's so beautiful. Wonderful. Wonderful. Thank you, Savita. Thank you so much for, for showing that and giving us motivation that, see, like you are doing so perfect. Why can't we, right? We have to strive. Thank you so much, Ma. And being a part of all the aunties, Eagle Vision also. Taligada, not just now, but whenever you chant Lalita, you should have that alertness within yourself. Okay. There was this one thing. I didn't know if it was like goody or not. I'm trying to find it. Okay. Offline, vadami va? Okay. Yeah. Astu. Astu. So beautiful. Shall we close with invocation? Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Shanti shanti shanti. Oh, recording is still going on?